discussed various programs last time on file handling. So we discussed the programs like uh, how to count number of characters, number of words in a file, then how to copy the contents of one file to another, then how to read and write different types of data. Like sometimes maybe we want to read or write string from the file, or maybe some integer or float value. So how to perform all these operations on the file. So this program also we discussed last time. Now the last part in your file handling is reading or writing reading or writing user defined data. Okay, see, till now what we have seen, either we are reading or writing using character, okay, character type of data one by one, or maybe any data type also, like string. In one go we can read or write one complete character array or some integer float. So you built-in data type we can read or write from the file. But what is there any provision to read or write directly user-defined data types, such as maybe object of a class? Okay, so directly, if we want to read or write the object of a class, like student records, we are accepting from the user, and 100 students record we are accepting, and those records we want to put in a file. So, is there any provision for that? Yes, it is there. We can read or write the user-defined data types also in a file. But just before that, we should be familiar with the file pointers concept also. So file pointer is what? Each of these stream classes that we have seen, if stream or OF stream. So these if stream and OF stream, they're having inbuilt, or they have some pointers, okay, using which we can move in a file, maybe in forward direction, reverse direction, like that. So if we want to move in a file in forward or reverse direction, so that in that case we can use those pointers. Okay. So with IF stream, that is for reading. IF stream we open for which purpose? Reading purpose. So for reading purpose, get pointer is there, because reading is what we are getting the information, right now. So get pointer is there for IF stream class, and then OF stream class has a put pointer, because we are putting or we are writing something. When we open the file in a OF using OF stream class, it is for writing or putting purpose. So put pointer is there with OF stream. Okay. Now, which is the derived class of both of these classes, IF stream and OF stream? If you remember that class hierarchy, from both of these classes, one more class is inherited. Okay, that is F stream. These two are the parent classes for this derived class. Okay, so F stream inherits these two, so automatically these get and put pointers are available in F stream through inheritance. Okay, so if stream get pointer, OF stream put pointer, and F stream is having both the pointers, because F stream is what you may read or write, both the operations you can perform on the file. Okay, so now as we have seen that both of these classes, all these classes are having get and put pointer, but how to understand where they are at this point in time, or their position, or how to make them move in different directions and all that. So for that we have a set of functions. Say like seek g function is there. Here g and p stands for get pointer, and this p stands for put pointer. Okay, so and seek operation is to move those pointers to respective position, and tell is to understand the current position. Okay, to get the current position of these pointer, we have tell function, and seek is to make them move in different direction. Okay, and g and p is what? G is a get pointer, p is a put pointer. Similarly here also g and p is there. So seek G is what? Seek is what? We are moving it. Okay, we are making that pointer move. Which pointer we are making move? Get pointer. So move the get pointer to a specified location is seek G. Similarly, moving the put pointer in a specified position is what? Seek P. Now, how to get the existing or current position of those pointer? Because now, while writing the program, maybe you are moving forward, reverse, different direction. You are putting some records and all that. But now after that, after some time, how to track the existing position of that pointer? Okay, so for that tell G and tell P is there.
it will tell you the current position of get or put pointer. Yes, accordingly we have to use either tell G or tell P. So like that, for moving these get and put pointer in different directions and to understand the current position, we have seek and tell functions. Now, the other prototypes simply also you can use, but the main prototype of SIGG is what, like when we are moving the pointer, so we can move from different positions. Okay, either we want to move, sometimes no, the user may want to change or to read the fifth record. Okay, so fifth record is from the beginning or from the starting fifth record. Okay, so the reference position for you is what? The beginning position. And how many positions you want to move ahead? Five records you want to move ahead. So like that, two inputs you need for SIGG and SIGP. From which position? Reference position is what? From where you want to move. And offset is what? For how many bytes you want to move either in the forward or reverse direction. Okay, so offset is what, how many bytes, it should be in bytes. Okay, this has to be given because this your compiler understands language of bits and bytes only. Okay, so this offset has to be given in bytes, number of bytes. And the reference position can be, how many reference positions are possible? Obviously three only. Either from the beginning you want to move, from end you want to move, or from current position you can move. है ना, beginning, end or current position. So these are the reference, three reference position. Okay, so these two inputs you can give to either SIGG or SIGP based on whether you want to perform the read operation or write. Read करना है तो SIGG, write operation करना है तो SIGP command you can use. Okay, and you can make this pointer move, put pointer to move to that particular position. Okay, so offset represent number of bytes, and reference position can be one of these. Either from the beginning you can move, from end you can move, or from current position you can move. So these three, only these three are the options for reference position, and these has to be given in this format because these are declared in iOS. Okay, so they are predefined, they are available in this iOS class. We have seen the other day that hierarchy, it starts with which class? iOS class. So all these three are, these positions are declared in iOS. So reference position can be one of these. And from these reference position, you can move in forward or reverse direction, any direction with the help of offset. Now here I have put one example. Now just see this first, how to use these functions. F object, this is what? The file that you have opened, that object, dot SIGG. SIGG is what? We want to perform read operation. So we are using SIGG to move that pointer to which position? From current position. What instruction I am giving to the compiler? From current position, iOS current, from current position, how many bytes? This is bytes, number of bytes. So how many bytes I want to move? If I'm giving -10, then from current position, it will move backward direction, 10 bytes backward direction. And if this is +10, then from current position, it will move in the forward direction by how many bytes? 10 bytes. Okay, so this is the reference position from where you want to move, and these are the number of bytes that you want to move either forward or reverse direction. Reverse hai to you give negative number, and forward hai to normal positive numbers can be. Okay, so next example is what? F object dot SIGG. Again, reading only we are performing. And if I have to reach to the end of the file, okay, suppose wherever I am now, but in my program now I want to go to the end of the file. Say for example, I want to put that pointer to the end of the file. So what instruction I can use? SIGG, and then I'll say reference position is iOS end. So end position से कितने bytes मुझे move करना है? 0. मतलब it will actually point to the end position. Yes, it is 0 matlab it will actually go to the end position only. It is not moving anywhere from the end position. Simply reference is end, and then here 0. If I want to if I want to read the last or second last record, in that case, what should be the instruction?
I have to go to iOS end. Okay, from end position, those many bytes I have to move in a reverse direction. So when you are saying from end we want to move, so this should be a negative number or zero. क्योंकि एंड से आप फॉरवर्ड जा ही नहीं सकते, एंड इज डायरेक्टली एंड ऑफ द फाइल. So whenever it is the reference position is end, this should be either zero or negative number. When you give the reference position as the beginning, okay, if it is beginning, then always the number should be, this offset should be positive, because from beginning you cannot move in the reverse direction. But whereas whenever you are moving from the current position, it can be positive or negative, you can move in both the direction. Okay, so this is about what you can randomly make. See, till now what we have seen, we have moved in a sequential direction. Okay, abhi tak jo ye program se inme we open the file, and from the automatically from the beginning we start reading or writing operation from the beginning. We cannot go back to the previous position or any random position with the help of these set of instruction. But when we see these SIGG and SIGP, we can make those pointer move to any random position. So when you can move to any random position, then it is called as random file handling, right? So till now what we have seen only sequential file handling, but with the help of these set of functions, now we can move it any direction. We can make those pointer to point to any position in the file. Randomly we can move in the file. So these, when we are using these set of instruction, then we can say that we are doing random file handling. Two ways are there to handle the file, either sequential or random. Okay, sequential is what, whatever programs till now we have seen, we moved in a sequential direction. Okay, so just we get the data, we put that data in the file, and then but if I want to read that file again, suppose here in this case we open this file in output mode, then we perform all the out operation or write operation on that file. Okay, and then why I'm closing this file here, because see, with the same file I want to perform now read operation, but still here I close this file, and then I reopen this file in the read mode. ifstream is what I'm opening this file in the read mode. So read mode is what, now again I want that pointer to start from the initial position. Okay, so whenever you close that file and reopen it, so after reopening, automatically that pointer goes to the initial position. Okay, it automatically goes to the beginning or initial position, starting. Okay, starting of the file. So when you reach to the beginning of the file, whatever operations you are performing, it will again start from the beginning, from the first record. So here, which technique we have used? It is sequential file handling. So which technique we have used? We write all the records, we close that file. After closing, when we reopen that file in any mode, automatically your pointer goes to the initial position. तो यहाँ पे आपका पॉइंटर ऑटोमेटिकली इनिशियल पोजीशन में जा रहा था, तो आपने इसलिए यू डिडंट मूव इट, नो, है ना? Before reading all the records, we didn't explicitly move that pointer because we are reopening. जब भी आप ओपन करते हो कोई भी फाइल, तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंटर कहाँ चले जाते हैं? आपके बिगनिंग पोजीशन पे. So that's the reason here I am not dealing with those pointers. मैंने कुछ भी नहीं किया get और put pointer, मैंने सीधे क्लोज कर दी वो फाइल और रीओपन कर दी. ओपन करने के बाद वो इनिशियल पोजीशन पे गया. So now whatever I am reading, it will start from the first record. Okay, so this was happening with sequential file handling. कि हमें वो फिर से क्लोज करनी पड़ती है फाइल टू गो टू द इनिशियल पोजीशन. In random file handling, with the help of these this SIGG, SIGP and TELG, TELP functions, you can move anywhere in the file. आपको एकदम randomly you want to go to third record, fourth record. So all these random file handling is possible with the help of these set of instruction. Okay, ये control आपके पास आ गया कि कौन से position पे जाना है pointer को, with the help of these set of instruction. Okay, so that's the reason this way of handling the file is called as random file handling. Random matlab randomly you can travel in that file, you can go to the fifth record, end of the file, anywhere you can go with the help of these set of instructions. So now let us understand how to use this set of functions. Okay, so this here I've used SIGG function and TELG function.
which is used for reading purpose. Okay, and the program is written to obtain the file size. Suppose I want to find out what is the size of this file. साइज ऑफ द फाइल ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? लॉजिकली आपको क्या कर सकते हैं? यू पुट योर पॉइंटर्स एट द बिगिनिंग, find out what is the offset of it, okay, where it is, and then you point your pointer at the end of the file. और वो subtract करने के बाद number of bytes, you will get number of bytes in return. So when you subtract the end position from the beginning position, you will get size of the file, है ना? आपको क्या करना है? एक बार उस पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन पे लाना है, एक बार उसको एंड पे लाना है, और वो पोजीशन आपको लेनी है. Yes, and then you need to subtract end position from the beginning, so that will give you the end of the files, size of the file. So same thing I am doing here, beginning and end some integer variable I have declared. Then I have opened this file. Excuse me. Then I open this file. Okay, so here explicitly I mention iOS binary mode. Okay, so in binary mode I am performing all the operations. Binary is what? It will perform it in terms of zeros and ones. So before it reads the data or writes the, before compiler writes the data into the file, it converts it into machine language, right? Na, zeros and ones. So that is nothing but binary mode. Okay, in file it will, before it writes the data in the file, it converts into the binary. The other day, if you remember, I've shown you an example. We executed one program, and that file was created .txt. That .txt file was created for product. So when we opened that file, we could read that file because it was in the normal method. In terms of character only, that data was written or read from that file. Whereas if you mention iOS binary mode, in that case, what will happen? Even if you open that file, you won't be able to read it because the before compiler writes the data into the file, it converts into binary language. अगर आपने यहाँ पे explicitly mention किया, then only it converts into binary. Otherwise, if we don't mention it in binary, then automatically normal way it will read and write. Okay. So here for reading purpose, I've opened it. Once I open it, I'm finding out the beginning position. Okay, beginning position कैसे आएगी? आपको position लेनी है तो tell function we need to use. So tell g is get pointer. So that object, my file object dot tell g will tell you the position wherever it is pointing at this point in time. कहाँ पे वो होगा अभी initially? 0, because just now we have seen that whenever you open any file, जब भी आप कोई भी फाइल ओपन करते हो, your pointer is always at the initial position, that is 0th position, है ना? initial position पे रहेगा वो always. So this tell g will give you the initial position, okay, the beginning of the file, that is 0. Now I want to find out the end position. Number of bytes return करता है ये tell g. क्या return करता है? Bytes में वो position return करता है. So it is at the beginning. Next, that object dot seekg. Now I'm seek कब use करते हैं? When I want to move that pointer. अब मुझे कहाँ पे लेके जाना है pointer को? End में लेके जाना है. तो reference position is iOS end. From end 0th byte. That is you stay at end position. We are saying. Okay, so get pointer will stay at the end position, and then again I'm using tell g position, tell g function. tell g अब कौन सी position देगा? End of file, सबसे last वाले byte की position देगा, because you moved that pointer to the end. So this will give you the end of that file position or number of bytes it will return. ठीक है, तो ये beginning वाले position हो गई, ये end वाली position हो गई. So whenever and then I close that file. So here what I want to display, end minus beginning. So this will give me the size of that file in terms of bytes. Bytes में उसकी size क्या है? तो end position minus beginning position, है ना? End position minus beginning position will give me the size. So in case if you want to find out the size, logically you can perform any operations on this. You can find out the size of the file and all those things. You can move those pointers, okay? So this is how these functions are used.
Now we have seen how to make those pointers move in different direction or how to get the current position. Current position लेने के लिए tellg tellp is there, and to move it sigg and sigp instructions have it. Okay. Now, as I was telling you, which are the functions available to read or write the user-defined data type? Till now, we have seen what normal built-in data type, how to perform read-write operation. Now, with user-defined data type, if I want to perform any operation, so for that, I can use read and write instruction. Directly objects we can read and write now. कोई मान लो आपका एम्प्लॉय का क्लास है तो डायरेक्टली दैट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट यू कैन रीड एंड राइट इन द फाइल. यू नीड नॉट सेपरेट द नेम, देन अलग अलग करके उसका आईडी एंड ऑल द सैलरी. In one go entire object can be read or written into the file. Okay, so this is the importance of read and write function. Now what is the syntax of it? Syntax uska kya hai? This is the object, file object dot read and write functions we are using. Do not get confused with this syntax. It's very simple if you understand. See, first thing is that you need to give what the beginning position. आपका object है वो कितने भी bytes का हो सकता है. Like say for example, you have created an employee object. तो employee object में सिर्फ आपने अगर ID और उसका salary लिया है, तो ID is 4 bytes and salary is 4 bytes for example. So size of that object will be 8 bytes. है ना. तो कंपाइलर को अब बिल्ट इन डेटा टाइप क्या है कि कंपाइलर नोस कि व्हाट इज द साइज ऑफ ईच ऑफ दीज वेरिएबल्स. लेकिन आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जब हो जाता है तो कंपाइलर डज नॉट नो कि कितने साइज का डेटा है आपका, वो ऑब्जेक्ट की साइज क्या है एग्जैक्टली. बिकॉज इफ यू एड ओनली आईडी एंड salary, in that case size would be 8 bytes. But suppose along with these two I also add the name of that employee. Okay, character array मैंने 20 size का declare कर दिया वहां पे, name of the employee. So now what will be the size of each object? 4 plus 4 plus 20, 28 bytes है ना. So it is programmer's decision what will be the size of that object. So before you perform read or write operation, compiler wants the size of each object there. Okay, so how much size that object is having before it performs a read or write operation on the file, the compiler should be very clear with the size of that object. Okay, so you need to give the size of that object. See, this v is nothing but object of that class है ना. हमने employee class अगर create किया है तो v is a object of employee class. So size of that object you need to give as input to this read instruction. उसका size देना है. Second thing is you need to give the initial position of that particular or the address of that particular object. ओके तो एक बार इनिशियल एड्रेस मिल गया उस ऑब्जेक्ट का तो उसमें कितने भी कंटेंट्स है दैट कंपाइलर कैन फेच दोस कंटेंट्स. इट जस्ट नीड्स द इनिशियल पोजीशन, ओके, और द पॉइंटर टू दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. तो एक क्या देना है आपको, वन पैरामीटर इज द एड्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ये क्या है, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो दोनों ही चीजें देनी है आपको. क्या देना है, एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. But before you give the size of the object, it has to be converted into character pointer. So this is the syntax of this read and write. Whenever you give address of any of the object, okay, अब ये इसमें कैसे अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है ना. तो that pointer has to be converted. This is user defined pointer, right ना. This is user defined pointer. So this has to be converted into character pointer. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए the file converts it into, the compiler converts it into a standard pointer, that is character pointer. Okay, तो ये आपका ऑब्जेक्ट जिस भी टाइप का होगा, the address of that object will be converted into character pointer. Okay, so only two inputs are required, size of the object and address of the object. ये दो input आपको देने हैं, but address of the object has to be converted into character pointer. So this you need to keep in mind. Otherwise this syntax is also very simple. And these operation, read and write operation, handles the file in a binary format. मतलब आप कुछ भी मेंशन करो नहीं करो तो भी वो बाइनरी में ही हैंडल करेगा डेटा, है ना.
So here we take the example of user defined data type, such as maybe here class is student class. Okay, so class student is there. ID is nothing but roll number only, roll number of the student and name of the student. So these two things we want to store now, for example. So like the way, see, we are not making any change in the class. इसमें आपको कुछ भी अलग नहीं दिखेगा. Normal method I have used for reading and writing purpose. This type of classes we are already creating. Like say here get data and put data or show data function is there. Get data मतलब to read this ID and name. So we are saying enter the ID, we accept it using scene. Similarly, enter the name and we accept it using, you may use like normally also we can use here scene or getas. I'm not using this getas on file. Do not get confused with that. ये getas किस पे काम करेगा? आपके कीबोर्ड पे scene के साथ. Okay, so this getas will work with scene only. We haven't mentioned any file object here as such. So ye either if you are not happy with this get as not familiar, maybe you can use scene function also directly. So scene ID and scene name. Similarly, show data is to display all these things. So मैंने क्या किया, like this ID I have displayed and the name I have displayed. Similarly, put as function I have used. Put as नहीं आपको चाहिए तो you use see out also because we are performing this operation on screen only. तो ये put as या see out किस पे काम करेगा? Screen पे ही. Because till now we haven't opened any file. ये normal आपका reading writing function है. Return ID function also I have declared in case if required. I'll say return ID. तो ये ID return करेगा because these two are private member. Private member के साथ हमने क्या देखा है? Like we can have separate get and put function. है ना? Get is to get those values and put is to write those values. है ना? Generally for private data types we can have read and write get and put functions separately. So likewise here for this ID I'm saying return ID, or you can say get ID also function. It will return the ID of the object. Okay. This is to read the data, this is to write the data, this is just to take the ID. Now here see I'm not in main function till now, है ना? आपका क्लास कहाँ पे खत्म हो गया? यहाँ पे क्लास खत्म हो गया. इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया. फाइल हैंडलिंग नथिंग इज देयर रिलेटेड टू फाइल हैंडलिंग. नॉर्मल फंक्शंस है आपके रीड राइट एंड ऑल दैट. ओके. नाउ दिस इज वन फंक्शन, इंडिपेंडेंट फंक्शन. सी हियर क्लास एंड्स. क्लास आपका यहाँ पे खत्म हो गया. वन इंडिपेंडेंट फंक्शन आई एम डिक्लेयरिंग void write data. So this in this write data function I will perform or I'll do file handling. Okay. So one independent function I have declared write data, in which I'll declare the object of this student class. जो भी हमने यहाँ पे student class create किया था, here I'll create the object. Okay. Now I want to see the file does not exist now. First I have to write the data into file, then only I'll be able to read the contents. है ना? Obviously पहले तो मुझे कुछ डालना पड़ेगा उस file, right ना? So first I'm opening that file in which mode? Writing mode. OF stream मतलब write mode में मैंने open किया उस file को. Now on that object, like here I'm opening that file. Okay. Now see here I've explicitly mentioned it is binary format. I want to do all the operations. Okay. And then iOS app is what? Append mode. That is what I'm telling the compiler if it already exists. Yes, student dot dat हो सकती है, any other file like if it already exists, in that case add the record at the end. Append मतलब कहाँ पे जाएगा आपका pointer? शुरू में ही, at the beginning when you open this file, at the beginning only your file pointer will reach to the end of the file. End में जाएगा because you are opening this file in append mode. Append mode मतलब you want to add the next record. Already suppose मान लो उसमें 3-4 record है, अगर in case if already records are already there, in that case you open that file in append mode. Okay. Append से क्या होगा कि जो भी initial record है वैसे ही रहेंगे आपके, and you directly your pointer will reach to the end of the file. तो इसके बाद जो भी आप record डालोगे वो end में merge होता जाएगा. Okay. So that is nothing but append mode. अगर मान लो यहाँ पे append mode नहीं होता,
So then in that case what will happen, it will open this file and your file pointer will be at the beginning of the file. अगर beginning of the file है तो then in that case whatever record you are putting in that file it will override the existing record. अगर already मान लो उसमें कुछ है, मतलब पहले तो आपने 5 स्टूडेंट के लेके रखे हैं रिकॉर्ड, already that file is holding that data and you open that file in normal write mode, मतलब आपने ये अपेंड मोड मेंशन नहीं किया. So in that case what will happen, it will start reading or writing the data from the initial position. तो मान लो अगर आप राइट कर रहे हो, राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो वो किस पे होगा, अगर ऑलरेडी मान लो उसमें कोई रिकॉर्ड है तो उसमें ओवरराइट होता जाएगा रिकॉर्ड. If you don't want to override the existing record, so in that case you need to open that file in append mode. Append matlab, as the name suggests, whatever data is there you preserve that data and append the records or merge the record at the end. Okay, so this is the purpose of append. So now I have opened this file in append. That means maybe already something is already I have written data in that student.dat file, and now I'm adding the record at the end. New records will be appended. तो ये फाइल तो ओपन कर लिया हमने. Now next is what? In one go, the entire student record I want to write in the file. Okay, so before I write the entire object into file, that object should hold the data. उस object में data तो चाहिए ना. So what I'll do is I've created the object of the student. Okay, so on this object I'll call get data function. ये get data function कौन सा है आपका? ये function है. So it will read this ID and name from the user. है ना, ये ID और name इसमें store हो गया अभी. In which object? This object, obj. And now this object I can write in the file. तो पहले तो मुझे वो रीड करना पड़ेगा वो सारा डेटा इसमें ऑब्जेक्ट में यूजिंग गेट डेटा फंक्शन. नॉर्मल फंक्शन आई एम कॉलिंग, है ना. तो ये ऑब्जेक्ट में गेट डेटा हो गया एंड नाउ आई कैन पुट दिस एंटायर ऑब्जेक्ट इन द फाइल. सो विच इंस्ट्रक्शन वी यूज फॉर राइटिंग द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप? राइट इंस्ट्रक्शन. ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अगर मुझे डालना है तो आई हैव टू यूज राइट इंस्ट्रक्शन. So file object dot write. Now which are the two inputs to this function? क्या क्या input देने हैं आपको? Yes. Object and size of. Yes, correct. Size of the object and the address of the object. दो input आपको देने हैं. तो address of the object has to be converted into character pointer. तो ये एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया विच इज कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर पॉइंटर. एंड दिस इज साइज ऑफ. साइज ऑफ इज अ रेडीमेड प्री डिफाइंड फंक्शन, आपको सिर्फ यूज करना है. साइज ऑफ इंटीजर अगर मैं देती हूँ तो इट विल रिटर्न 4. साइज ऑफ फ्लोट इट विल रिटर्न 4. साइज ऑफ डबल, साइज ऑफ और बीच यहाँ पे पैरेंथेसिस में मैंने डबल लिखा तो इट विल रिटर्न व्हाट? 8. So size of is a predefined function which returns you the size of that particular data type. तो यहाँ पे साइज ऑफ ओबीजे, तो साइज ऑफ ओबीजे जो भी होगा आपका, लाइक हियर इट इज 20 + 4 तो 24. so this size of function will return 24. okay, and this is the address of your object. so these two inputs we are giving to write. अब इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. कंपाइलर इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. कंपाइलर क्या करेगा, उस फाइल में ये ऑब्जेक्ट राइट कर देगा. okay, this what is the position of the file pointer now? कौन सा फाइल पॉइंटर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? गेट और पुट? which pointer we are using now? put right ना, आउटपुट ऑपरेशन है. तो पुट सी ओएफ स्ट्रीम में कौन सा पॉइंटर होता है? पुट. ओके, एंड आईएफ स्ट्रीम में गेट, बिकॉज वी आर रीडिंग. तो यहाँ पे कौन सा पॉइंटर होगा? पुट पॉइंटर है. तो पुट पॉइंटर, सी हियर वी आर नॉट मेकिंग इट मूव यूजिंग सिक फंक्शन, है ना. सिक फंक्शन हमने यूज नहीं किया. ऑटोमेटिकली इट इज एट द बिगिनिंग, और बिगिनिंग में सॉरी एपीपी से कहाँ पे चला गया वो? ऑटोमेटिकली एट द एंड, राइट ना. सो एट द एंड इट विल राइट द रिकॉर्ड. जो भी आपने ऑब्जेक्ट यूजर से लिया है इट विल राइट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डेटा एट द एंड. एंड मतलब पहले जो रिकॉर्ड है वो एज इट इज रहेंगे, ये एंड में जाके अटैच हो जाएगा, नया रिकॉर्ड आपका अपेंड हो जाएगा. ओके, सो लाइक दिस
this is separate function I have written. Write data is a separate function I have written in which I have created that object. I open the file and then I'm reading the data in that object and that entire object I'm writing in the file. बस एक write instruction से वो पूरा object इसमें file में write हो जाएगा, है ना? This write function we are calling in which on which object fp2 ये file pointer पे. तो इसमें on this object if I'm opening this particular file हमने open की है. Yes, this is the name of the object. So when I'm calling write instruction I am calling on this file object. तो इस file object पे जो भी operation करोगे वो कहाँ पे जाएगा exactly? Indirectly कहाँ पे जाएगा? student.dat because this file object is attached to this file, right now. So here this object will be written in this particular file, okay, and then finally close the file. Now the next, what will be the next function? Read data. Write में हमने क्या किया? We accepted the data in that particular object and we have written that data in the file. अब read data में क्या होगा? You tell me now. मैम हाँ? डेटा भी बाइनरी मोड में ही राइट होगा क्या? Yes, data भी binary mode में ही write होगा because we have mentioned it, no? It will be written in binary. अगर ये फाइल मान लो आप बाद में ओपन भी करते हो तो you will not be able to read it properly. कुछ भी बीच में ऐसे कहीं कहीं पे नॉर्मल डेटा रहेगा, कहीं पे कुछ ASCII ऐसे रैंडम कैरेक्टर्स यू विल सी देयर. You won't be able to read. Through program you can perform read and write operation. मतलब ऐसे आप डायरेक्टली उस फाइल को ओपन करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. Through program if you open and read that those contents you will be able to read it like that. मैम डिफॉल्ट बाइनरी में ओपन होता है. Yes, in this see read and write instructions by default तो नहीं हम बोल सकते हैं. Like normal open and normally when we open the file it is it performs in character mode only. You can, अगर आपको याद है product.txt जो हमने create किया था, हम open करते तो we can read that file, है ना? मतलब वो normal character format में read और write होता है file. But when it is this read and write instructions, no, ये binary format में काम करते हैं. जो what you say, while reading or writing with the help of object directly, ये क्या है? आप directly object को read और write करते हो user defined data type को. So in that case these read and write operations they perform in binary mode. ये रूल जो है ना बाइनरी में ऑटोमेटिकली ओपन करेगा या राइट रीड करेगा. इट इज एप्लीकेबल टू रीड राइट फंक्शंस ओनली. रीड एंड राइट फंक्शंस वो बाइनरी में काम करेंगे. अदरवाइज अगर हम पहले वाले एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हमने कहीं भी ऐसे बाइनरी वगैरह एक्सप्लिसिटली नहीं किया था. इट इज नॉर्मल वे, है ना? यहाँ पे जैसे ये मान लो वी डोंट मेंशन एनीथिंग, नो. हियर आल्सो इफ आई मेंशन बाइनरी आई कैन मेंशन. ये नॉर्मल आपका सिक्वेंशियल फाइल हैंडलिंग है. सिक्वेंशियल फाइल हैंडलिंग में भी कॉमा करके इफ आई मेंशन iOS बाइनरी, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये product.txt में आप जो भी डालोगे ये नेम कॉस्ट वगैरह, सो इट विल गेट रिटर्न इन बाइनरी फॉर्मेट. कुछ ऐसे रैंडम दिखेगा आपको, एकदम 1-0 नहीं दिखते एक्चुअली, बट सम वी कांट रीड दैट फाइल. इफ यू ट्राई टू ओपन एंड रीड दोस कंटेंट्स यू वोंट बी एबल टू रीड दोस कंटेंट्स लाइक दैट. तो ये here also you can explicitly make it as a binary, okay? Otherwise अगर आपने binary नहीं mention किया तो normal character mode में जाएगा वो read write operation. But what I'm telling you is related to only read and write operation. I'm telling you ये जो read write operations है ये दोनों binary format में काम करते हैं. देखो ना उसका input भी कैसे है, size of object. तो ये क्या जाएगा? number of bytes. size of किस में जाता है? bytes में. और ये भी क्या है? एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस रीड एंड राइट ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड इन बाइनरी मोड. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. नाउ मान लो रीड ऑपरेशन, दिस इज व्हाट राइट ऑपरेशन. सो सिमिलरली इफ यू वांट टू परफॉर्म रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन मतलब क्या है? फ्रॉम फाइल आई वांट टू रीड द डेटा एंड आई वांट टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन. रीडिंग कहां से होगा? मेरा फाइल से. एंड डिस्प्ले कहां पे होगा? स्क्रीन पे. तो रीडिंग अगर फाइल से करना है तो विच ऑब्जेक्ट आई हैव टू क्रिएट? ifstream. करेक्ट, ifstream ऑब्जेक्ट है ना. रीड में क्या होगा? यहाँ पे ifstream. नेक्स्ट इज आई ओपन दैट फाइल. ओके,
एंड देन अगर मैंने उस फाइल को बाइनरी में राइट किया डेटा तो आई विल ओपन इन बाइनरी मोड ओनली। अब यहाँ पे अपेंड करके मुझे नहीं ओपन करना है, ये राइटिंग के लिए था इसलिए मैंने अपेंड किया है। क्योंकि राइटिंग में क्या हो जाता है, अगर आपने अपेंड में नहीं किया तो ऑलरेडी अगर कुछ डेटा है तो वो ओवरराइट करेगा। अगर इफ इट इज नॉट अपेंड देन इन दैट केस इट विल स्टार्ट ओवरराइटिंग द डेटा, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन क्या होता है, बिगिनिंग होता है। Append explicitly, if you put your initial position will be at the end, it will start appending। तो इसमें हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना था, राइट करने के लिए आई वॉज केयरफुल कि इट शुड बी एट द एंड ऑफ द फाइल। बट रीड करने के लिए देर इज नो कंसर्न ऑफ ओवर राइटिंग। रीड मतलब हम उस फाइल को कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, वन बाय वन वी आर रीडिंग द कंटेंट्स, है ना, एंड वी वांट टू डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे व्हाइल ओपनिंग दैट फाइल आई जस्ट मेंशन iOS बाइनरी, दैट्स इट। अपेंड मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू आर नॉट राइटिंग द डेटा, सो सिंपली सेइंग बाइनरी वुड बी सफिशिएंट। अब ओपन करने के बाद पहला इंस्ट्रक्शन आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट यू नीड टू रीड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल, मतलब पहले फाइल के कंटेंट्स आपको रीड करने हैं। तो बिफोर दिस फर्स्ट थिंग इज fp2.read। fp2.read में आपको इनपुट क्या क्या देना है, 2 इनपुट्स, सेम सेम एग्जैक्टली सेम देना है। हम कुछ भी यहाँ पे इनपुट में कुछ चेंज नहीं कर रहे। एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर पॉइंटर एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले हम रीड करेंगे फाइल से एंड देन आई विल से ऑब्जेक्ट डॉट पुट डेटा। पुट डेटा मतलब आपका ये वाला फंक्शन, सॉरी शो डेटा, ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा। So first what I'll do is I'll read from that file, okay, using read instruction, and then I'll say object dot show data to display it on the screen, and then I'll close the file. Okay, so this is about the read data or display function, wherein I have declared one object. Here I'll create ifstream object. I'll open that file. मैंने फाइल को ओपन किया। Here no need to mention ios.in, ये अननेसेसरीली रिडंडेंसी है बिकॉज ifstream है ना, तो ऑटोमेटिकली रीड के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हो आप यहाँ पे, तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बाय मिस्टेक अब डालते भी हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज इट इज इन ऑपरेशन ओनली। आपने कुछ उल्टा नहीं किया है कि ifstream में ओपन करके यू आर सेइंग ios.out, दैट इज एरर, है ना। This is what reading operation you are performing and you are saying in, that is okay, but not required unnecessarily. This is added actually. Binary is sufficient here. So I have opened this file in binary mode and then I'm having while because I don't know how many records are available in this file. इसमें मुझे पता नहीं है कि इसमें ऑलरेडी 5 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड है, आई डोंट नो इन दिस फाइल हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर। सो सेफर साइड व्हाट आई डू, आई यूज अ while loop till I don't reach to the EOF. EOF is what? End of file. Till I don't reach to the end of file, I'll go on reading the contents and displaying it on the screen. तो ये मैंने क्या किया है, while में डायरेक्टली रीड कर दिया है। while में directly I'm saying fp1.read data, and unless it is not reaching to the end of file, I'm saying iterate it and object.show data। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ मैं आपके लिए। Instead of this what I'll do is ये 2-3 ऑपरेशन मैंने एक साथ कर लिया। I'll simplify it। करेक्ट है। while Yes. what I'm doing fp1.read रीड कर रहे हैं, हमें यहाँ पे इस साइड में कुछ देने की जरूरत नहीं है because whatever operation is happening it is happening in this object directly। जो भी रीड करके जो भी see read is what you are reading from the file। फाइल से क्या रीड कर रहे हो आप, कितनी साइज का डेटा रीड कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की जितनी भी साइज होगी। अब ये मान लो ऑब्जेक्ट हमारा कितने बाइट्स का था, 24 बाइट्स का, तो 24 बाइट्स वी आर रीडिंग। हम क्लियरली कंपाइलर को बोल रहे हैं कि 24 बाइट्स वी वांट टू रीड इन वन गो एंड दोस बाइट्स टू बी स्टोर वेयर इन दिस ऑब्जेक्ट। तो ये जितने भी 24 बाइट्स है वो कहाँ पे चले जाएंगे, आपके ये वाले वेरिएबल।
ओके। एड्रेस डायरेक्टली वी आर पासिंग, एड्रेस पास करने से क्या होगा, जो भी डेटा रीड होगा वो उसमें ऑब्जेक्ट में जाएगा एंड दैट विल रिमेन देयर बिकॉज दिस इज कॉल्ड बाय एड्रेस वाला कॉल है ना, इसलिए हम इसका पॉइंटर ही दे रहे हैं डायरेक्टली। तो जो भी डेटा वी आर रीडिंग, वी आर एग्जीक्यूटिंग विच इंस्ट्रक्शन, रीड इंस्ट्रक्शन। From where we are reading? From this file we are reading. So from this file we are reading, and where we are reading, how many bytes we are reading? These many bytes we are reading. Size of obj 24 bytes we are reading, and where it will go, those 24 bytes it will go in this obj. So this is how you need to understand. हम क्या कर रहे हैं, हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, इस फाइल पे कर रहे हैं, एंड कितने, अब कितने बाइट्स, कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि आपने रोल नंबर और नेम देके रखा है या एड्रेस भी है या मार्क्स भी है। तो यू नीड टू एक्सप्लिसिटली गिव द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट कि कितने बाइट्स वन गो में उसे रीड करने हैं कंपाइलर को। तो मान लो यहाँ पे 24 बाइट्स थे, तो 24 बाइट्स कंपाइलर read from that file and the compiler will put those 24 bytes where in this object। इस ऑब्जेक्ट में चले जाएंगे वो 24 बाइट्स, जो भी डेटा इसमें स्टोर होगा फाइल में वो इसमें चला जाएगा। ओके, तो दैट्स द रीजन हियर रिटर्न टाइप मैंने कुछ लिया ही नहीं है यहाँ पे। आई एम नॉट सेइंग ओबीजे इक्वल टू, ये ऐसे मैंने कुछ नहीं किया, ओबीजे इक्वल टू, जरूरत ही नहीं है इक्वल टू की, because whatever things are whatever contents are read from the file will go in this obj। ओके, तो इसमें चला गया रिकॉर्ड, एंड देन ओबीजे में डेटा आने के बाद व्हाट आई से, ओबीजे डॉट शो डेटा। शो डेटा हमने कहां पे करके रखा है, वेयर इज शो डेटा फंक्शन इन दैट क्लास इटसेल्फ। क्लास का नॉर्मल गेट डेटा और शो डेटा हम कॉल कर रहे हैं एज पर रिक्वायरमेंट, है ना। तो आई रीड द डेटा फ्रॉम फाइल दैट ऑब्जेक्ट एंड देन विद द हेल्प ऑफ शो डेटा आई एम डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन। अब ये एक बार हो गया, एक रिकॉर्ड मैंने रीड कर लिया, डिस्प्ले कर लिया स्क्रीन पे। अब कितनी बार मुझे इटरेट करना है, हाउ मेनी टाइम्स, डू आई नो कि 4 टाइम्स 5 टाइम्स, नो आई डोंट नो। अब मुझे इतना ही पता है कि जब तक एंड नहीं होता है, फाइल एंड पे नहीं जाती है, तब तक मुझे ये करते रहना है। सो हाउ टू चेक फॉर दैट कंडीशन, हाउ टू चेक फॉर दैट कंडीशन, यस is not fp1 dot eos। करेक्ट, टिल यू डोंट रीच, नॉट है ना, टिल यू डोंट रीच टू एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल कैसे चेक करते हैं, fp1 इज द नेम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट डॉट eof, तब तक एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता। दैट्स द रीजन दिस नॉट इज देयर। टिल वी डोंट रीच टू एंड ऑफ फाइल वी हैव टू रिपीट दिस, है ना। सो दैट्स द रीजन दैट नॉट इज देयर। Till we don't reach to the end of file, one by one we are reading the record and we are displaying it on the screen। okay, तो ये जो previous function था वो क्या था, previous function was to read the data from the keyboard and write into the file। फाइल में डाल रहे थे हम सारा डेटा, और ये exactly उल्टा है कि read from the file and put it on the screen। जितने भी कंटेंट से फाइल से रीड करके one by one you put it on the file। ओके, मैम यस, इस ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा का और क्लास में जो शो डेटा फंक्शन है उसका कोई रिलेशन नहीं है ना? रिलेशन मेरा है ना बेटा, वो लाइक दैट शो डेटा इज दिस शो डेटा ओनली। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक रूल जान लो आप, लाइक विच एवर मेथड यू आर कॉलिंग, मेथड किस पे कॉल करते हो, मेथड कहाँ पे होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, जनरली मेथड कहाँ पे करते हैं हम, क्लास के अंदर। मेथड कहाँ पे होते हैं आपके, फंक्शंस कहाँ पे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, इनसाइड क्लास। इनसाइड क्लास। अगर मान लो कोई भी मेथड मेरी क्लास के अंदर है तो मुझे उसे कॉल कैसे करना चाहिए, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ऑपरेटर। परफेक्ट, ऑब्जेक्ट पे कॉल करनी चाहिए, है ना। सो आई एम कॉलिंग दिस मेथड ऑन विच ऑब्जेक्ट, यू आंसर दिस क्वेश्चंस, हाँ यस, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ना ना, दिस रीड फंक्शन आई एम कॉलिंग ऑन विच ऑब्जेक्ट, fp1 दैट मींस फाइल फाइल, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये रीड किस पे काम करेगा, फाइल। फाइल पे, है ना। तो रीड ऑब्जेक्ट हैज टू डू विद फाइल, कि रीड कहां से करेगा, फाइल से करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन, शो डेटा आई एम कॉलिंग ऑन विच ऑब्जेक्ट, ओबीजे हाँ कौन से टाइप का है ये, स्टूडेंट टाइप। हाँ, तो ये शो डेटा कहां से कॉल करेगा,
स्टूडेंट। तो फिर अभी शो डेटा का इससे रिलेशन है? हाँ मतलब ऑब्जेक्ट डॉट शो डेटा जब हम करते हैं करेक्ट। तब फाइल से रीड प्रिंट होता है ना, ऐसे नहीं मैं नहीं बोल। नहीं नहीं, वन 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 मोमेंट। अब ये मान लो यहाँ पे, जस्ट आई एक्सप्लेन, आई गिव यू एनालॉजी। अब मान लो कोई एक बहुत बड़ा ड्रम है, उसमें से आप पानी निकाल रहे हो, है ना। ड्रम इज लाइक योर फाइल, है ना। और एक बकेट लिया आपने, तो ड्रम में से आपने बकेट में डाला है पानी, है ना। सो दिस इज लाइक फाइल इज दैट दैट काइंड ऑफ ड्रम। ओके, वहां से निकल के कहाँ पे चला गया आपका, आपका डेटा कहाँ पे चला गया, ओबीजे में, है ना, बकेट में चला गया। अब जो भी, अब इसके आगे वो बकेट के साथ आप डील कर रहे हो, नॉट विद द ड्रम, है ना। तो ये शो डेटा किसके लिए है, वो बकेट में जितना भी पानी है उसके लिए है, नॉट विद द फाइल। फाइल में तो बहुत सारा डेटा पड़ा है, फाइल से आपने कितना निकाला है, जितना बकेट में हो सके उतना ही। दिस इज ऑब्जेक्ट लाइक अ बकेट, उसमें जितना जाएगा उतना ही जाएगा। तो इसकी साइज क्या थी, बकेट की साइज है 24 बाइट्स। तो 24 बाइट्स सिर्फ आपके वो बकेट पे चले गए। अब उससे आपका नेक्स्ट ऑपरेशन किसके साथ होगा, वो बकेट के साथ होगा। अब भूल जाओ वो ड्रम को। now whatever things we are doing with that bucket, so show data is for only for that much water और those many contents you can say, है ना। तो यहाँ पे कैसे कर रहे हो आप, उसमें से डेटा निकाल रहे हो, फाइल में से कहाँ पे डाल रहे हो, ऑब्जेक्ट में डाल रहे हो। इट इज लाइक इंटरमीडिएट कंटेनर, यू कैन से एक कंटेनर है इंटरमीडिएट कि फाइल से निकाल के, क्योंकि फाइल में बहुत सारे डेटा है ना, तो आपको इन वन गो कितना डेटा निकालना है। हम कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर आप मान लो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, ये नहीं, नाउ हियर आई हैव ओपन दिस फाइल, फाइल को ओपन किया एंड देन टिल एंड ऑफ फाइल व्हाट आई एम डूइंग, fin.getch। तो इन वन गो हाउ मेनी, हाउ मच डेटा आई एम रीडिंग, फाइल से रीड कर रहे हैं ना। गेट फंक्शन आई एम कॉलिंग ऑन विच ऑब्जेक्ट, fin मतलब फाइल। तो फाइल से इन वन गो हाउ मच डेटा आई एम रीडिंग, वन वन कैरेक्टर, है ना। एक एक कैरेक्टर, कंपाइलर को पता नहीं है, कंपाइलर जो इंस्ट्रक्शन आप कंपाइलर को दोगे, कंपाइलर उतना ही काम करेगा। इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, एक कैरेक्टर ch डिक्लेयर किया है एंड वन बाय वन आई एम रीडिंग दैट कैरेक्टर। कैरेक्टर रीड करने के लिए विच इंस्ट्रक्शन इज देयर, गेट इंस्ट्रक्शन इज देयर। कैरेक्टर रीड करना है तो गेट है। अगर आपको एक स्ट्रिंग, पूरी स्ट्रिंग एक वन गो में लेनी है तो गेट लाइन, पुट लाइन, दोस फंक्शंस आर देयर, है ना। या गेटस फंक्शन इज आल्सो देयर। तो गेट लाइन, पुट लाइन, गेटस, पुटस, दोस फंक्शन वी कैन यूज फॉर स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आई एम रीडिंग फ्रॉम दी फाइल। अगर मान लो मुझे ये डिस्प्ले करना है आउटपुट पे, कैसे करूंगी मैं, स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे करूंगी, यस, cout ch। ch। तो इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से वन बाय वन आई एम रीडिंग द डेटा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एंड आई एम डिस्प्लेइंग इट ऑन द स्क्रीन, है ना, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अब यहाँ पे कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल नाउ, कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल नाउ, अब हम रीड कहाँ से कर रहे हैं, फाइल से कर रहे हैं। कितना डेटा रीड कर रहे हैं हम यहाँ पे, रीड जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसे काम करती है कि इन वन गो इट विल रीड दीज मेनी बाइट्स। अभी आपका गेट कैसे कर रहा था, एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा, यहाँ पे क्या होगा, पूरा ऑब्जेक्ट रीड हो रहा है। ओके, एक ऑब्जेक्ट मतलब कितनी साइज है उसकी, ऑब्जेक्ट की साइज हमने देखी है कितनी है, 4 बाइट्स प्लस 20 बाइट्स, है ना, 24 बाइट्स। तो इन वन गो व्हाट विल हैपन, in one go what will happen is size of obj मतलब 24 बाइट्स कहां से रीड होगा, आपके फाइल से रीड होगा। इतने 24 बाइट्स रीड हो गए, कहां पे चले गए, ऑब्जेक्ट में चले गए। ये डेस्टिनेशन है जिसमें डालना है। कंपाइलर क्या करता है, इतने बाइट्स रीड करेगा और डालेगा कहां पे, इस ऑब्जेक्ट में। तो ये कंटेनर हो गया, कंटेनर में डेटा चला गया। अब इसके बाद ये पूरा कंटेनर आपको कहां पे पोर करना है, वेर यू वांट टू पुट इट, ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे डालने के लिए विच इंस्ट्रक्शन इज देयर, आपने ये शो डेटा फंक्शन लिख के रखा है ना, स्क्रीन पे राइट करने के लिए। तो व्हाट वी आर डूइंग इज विद दिस ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में चला गया,
नाउ यू फॉरगेट अबाउट फाइल, फाइल का काम हो गया, फाइल से आपने रीड कर लिया, वो ऑब्जेक्ट में आ गया, इसके बाद फाइल को आप ध्यान में ही मत रखो, यू फॉरगेट अबाउट फाइल। नाउ इफ आई हैव टू डिस्प्ले द डेटा विच इज अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट, आपके ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया है, यस, ऑब्जेक्ट का डेटा आप कैसे डिस्प्ले करते हो, टेल मी। कोई रैंडम फंक्शन कॉल करके, मतलब हाँ, दैट फंक्शन विच यू हैव रिटन इन दैट क्लास, है ना, क्लास में जो आपने लिख के रखा है ऑलरेडी। अब यू फॉरगेट अबाउट फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग का काम यहाँ पे खत्म हो गया, आपने रीड कर लिया, नाउ नथिंग टू डू विद द फाइल। अब आगे का काम क्या है, इस ऑब्जेक्ट के साथ, उसमें डेटा आ गया अभी, तो अगर ऑब्जेक्ट का डेटा मुझे डिस्प्ले करना है तो उस ऑब्जेक्ट में जो भी फंक्शन होगा वो मुझे कॉल करना पड़ेगा डिस्प्ले करने के लिए। विच फंक्शन इज देयर इन दैट ऑब्जेक्ट, शो डेटा फंक्शन इज देयर। ओके, सो नाउ शो डेटा आई एम कॉलिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ये फाइल हैंडलिंग का इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये आपके ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल है। फाइल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से रीड कर लिया आपने फाइल को, एक ऑब्जेक्ट। मतलब हाँ, यस, फाइल में से हम डेटा गेट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम शो डेटा के फंक्शन के थ्रू हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ऐसा ही ना? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, समझ गए ना। वैसे ही राइट में उल्टा हो रहा है, राइट में हमने क्या किया है, राइट में क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऑब्जेक्ट में डेटा रीड करना पड़ेगा, है ना, फर्स्ट यू नीड टू पुट। अब उल्टा मान लो, अब आपका ड्रम एम्प्टी है, नाउ फ्रॉम दैट बकेट यू वांट टू पोर सम वाटर इन दैट ड्रम, है ना। तो ये पहले तो आपको वो कंटेनर में कुछ तो डेटा डालना पड़ेगा, लाइक यस। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्ट को रीड करना है, ऑब्जेक्ट रीड करने के लिए which function is there, get data function is there, है ना। आपके आपके ऑब्जेक्ट पे आपने फंक्शन को कॉल किया, रीड किया आपने सारा डेटा ऑब्जेक्ट पे। अब इसके बाद इस ऑब्जेक्ट में डेटा आ गया, नाउ दिस ऑब्जेक्ट यू कैन पुट इन द फाइल। पहले ऑब्जेक्ट में डेटा लाना है एंड देन राइट इट इन द फाइल। ये उल्टा हो रहा है, मतलब पहले तो हम रीड को कॉल कर रहे हैं ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट एंटायर ऑब्जेक्ट आई एम पुटिंग इन द फाइल, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, सॉरी, फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं एंड देन वी आर पुटिंग इट ऑन द स्क्रीन। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? यस मैम। यस। नाउ you can search for the record also कि ये रिकॉर्ड उसमें है कि नहीं, लाइक रोल नंबर वाइज यू कैन सर्च। रैंडम फाइल हैंडलिंग है ना, तो सिक्वेंशियली जाने की जरूरत नहीं है आपको, रैंडमली वेदर दिस रोल नंबर। अब मान लो आपने 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर किया है फाइल में, और आपको देखना है कि रोल नंबर 3 इज देयर और नॉट इन दैट रिकॉर्ड, मतलब रोल नंबर 3 का डेटा है कि नहीं। आपका मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया है, सो दिस लास्ट ओनली 2-3 स्लाइड्स आर लेफ्ट एक्चुअली। Okay, anyways, I'll record one short video and I'll put it on the classroom, है ना, क्योंकि एकदम लास्ट का पार्ट ही बचा है actually. Yes, so your attendance is marked now. Do you have a break now? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है then. Thank you. You can leave the class. Thanks for attending the class. Yes. Thank you. Yes, Thank you. Thank you.